We discussed about contact forces. The first one is friction force and the another one is normal reaction. उसके बाद टेंशन इन स्ट्रिंग भी डिस्कस्ड कि स्ट्रिंग के क्या प्रॉपर्टीज होंगे, बताओ रोहित. व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज फॉर अ स्ट्रिंग? रोहित, स्क्रीन पे लिखा है यार, बताओ. व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज? always pulling in nature, away from Pulling in nature. स्ट्रिंग की दो प्रॉपर्टी क्या होंगी, बताओ. pulling लोहित, लोहित गलत बता रहे हो बेटा. आपके लिखा हुआ है स्ट्रिंग शुड बी. pulling in nature, pull on both ends. स्क्रीन पे लिखा हुआ है, यू कांट रीड दैट. Ah, साहिल, yes. what are the two properties of a string? साहिल बताओ बच्चे. Massless, स्ट्रिंग के सर intense, हाँ, string, yes. स्ट्रेच्ड रहता है और बहुत ही थिन रहता है. मासलेस रहता है ना. मासलेस रहेगा और दूसरा इनएक्सटेंसिबल रहेगा कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना. उसको उसके लेंथ को इंक्रीज नहीं किया जा सकता. द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैन नॉट बी इंक्रीज्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, है ना. फोर्सेस ऑन द स्ट्रिंग आर ऑलवेज पुलिंग इन नेचर और टेंसाइल में भी, है ना. राइट. तो उसको बोलेंगे कि forces on string are always tensile in nature because string cannot support compressive forces. अगर आप compressive forces लगाओगे string पर तो what will happen? If you apply compressive forces on a string, what will happen? The string will collapse, है ना. So that is what we learned about string. Then Newton laws of motion, we discussed it. Yes or no? बोलो. Hey, yes ना. Sai, we discussed Newton laws of motion. First law, what is first law of motion? Gurmanat. Gurmanat, what is first law of motion? Yuvraj, what is first law of motion, beta? Sir, F equals to ma. If a body at rest will remain at rest. If a body is in motion, it will remain in motion until and unless no external force is applied on it. ठीक है. क्या बोल रहा है कि state of motion of an object cannot be changed unless you apply an unbalanced external force. Yes or no, beta? Power से external force, unbalanced external force should be applied on an object so that to change its state of motion, है ना. If the object is at rest, then it will remain at rest until and unless there is an unbalanced external force is applied on it. If a body is moving with uniform motion, to change the velocity, you need to apply an unbalanced external force. So this is first law of motion. Okay. Now Lokojit. Yeah. What is second law of motion, beta? Lokojit Biswas. What is second law of motion? Beta, when I ask you doubt, should you answer or no? Yes, na. If you don't know the answer, then you can just unmute and say that, sir, I don't remember it. है ना? Sometimes you give me a feeling that my voice is not reaching you. Am I audible, right? Sir, F equals to ma. F is equal to ma. Okay. So this is second law of motion. Okay. Lohit, what is third law of motion, beta? सर एक्चुअली मेरा माइक ना थोड़ा खराब है, मतलब टाइम पे ना ओपन नहीं होता, मतलब डिस्प्ले थोड़ा डिस्टर्ब करता है. Okay, got your point. Lohit, what is the third law of motion? Lohit. Lohit, are you there, beta? yes sir. Lohit. If am I audible, just raise your hand, beta. Just wanted to see who all are attending the class. If my voice is audible, just raise your hand.
I think Lohit is not there in the class, है ना? Okay. Just keep down your hands, beta. So this is really bad, beta, है ना? You join the class, you leave, है ना? So you disregard everybody's effort in the class. ठीक है फिर अगर ऐसा करना है तो we can go that way also. So first law we discussed. Second law is F is equal to ma, and the third law is to every action there For is an every opposite reaction. equal and opposite. है ना? Force, single force does not exist, है ना? तो forces always exist in pairs. Right. We discussed it, right? Second law is F is equal to ma, and force is also directly proportional to rate of change of linear momentum that we proved here. Then we discussed, we found out the direction of momentum vector. Then we found out this F net, है ना? We found out the value of F3. Then third law of motion is to every action there is an equal and opposite reaction. So these are the salient features that we discussed in our last class. Then we discussed about free body diagram. We discussed it na beta? It is already discussed, yes or no? फिर मे भी आपने 5 बजे जो क्लास होती है उसमें किया था शायद। हाँ तो आप बताओ ना एक बार कि I don't exactly remember where we left yesterday. Third law of motion was discussed. नहीं सर मेरे से तो नहीं किया था मतलब और मन्नत Sir, I was absent in the Okay. previous class. 5 वाले क्लास में नहीं होता है मतलब। तो Sahil, we solved this question beta. नो सर मैं स्टार्ट ही नहीं किया था actually। NLM स्टार्ट ही नहीं किया हम लोगों ने। यस सर वो सब तो मतलब आता था। ये आपको आता था तो we have to start this chapter. Okay. और सर अगर आपको मतलब आगे से शुरू करना है तो फ्री बॉडी डायग्राम से शुरू कर लीजिए। हाँ एक बार everybody knows three laws of motion. एक बार फटाफट then I should discuss it in detail है ना? फटाफट से we will do it and then we can proceed. ठीक. So we know that force क्या होता है? It is a physical quantity which is experienced by push or pull. When we pull something or we push something, then we apply force, है ना? And the presence of force is experienced by changes in state of motion, or force tends to change the state of motion. The first example you can think of is कि suppose your phone is kept on your table, है ना? You apply some force with your hand. Will it move or your phone will move? है ना? So the state of motion of the phone is changed. Initially it was at rest, now you applied force and it is in the motion, right? So this is the effect of force that you experienced. Now think of a second situation. Suppose there is a train standing on the railway station and now you try to push the train. Will you be able to move the train better? नो सर No, sir. But you are trying to move that, है ना? So force is applied or not? Force is applied by your hands, but the train is not moving. Now the effect of the force is not observed, but the force is trying to move that train. So that is what is key. Force is something that either changes the state of motion or tends to change the state of motion. That means either it changes the state of motion or it will try to change the state of motion, right? The state of motion can be changed in three different ways. I will discuss it in Newton's first law, right? So basic characterization we will see first. That first force is contact force, है ना? Contact force, for contact force, two surfaces should be in contact. So there are two blocks here, and the contact surface is highlighted with this red line. So the contact forces will be applicable at the contact surface. The first one is, which is perpendicular to the contact surface, is normal reaction. So normal reaction will always be perpendicular to the contact surface. And the another force which is there, which is frictional force. So frictional force is parallel to the contact surface. Yes. Similarly, we will see that tension in the string. Tension in the string is, what is a string? String is something like this, है ना? A rope, a thread, or a wire, है ना? These are all an example of a string. But the string is considered
only when it is massless and inextensible. So these assumptions are made just to simplify our calculations, right? This wire is there. Does it has some mass or not? It has some. It has some mass, Yes. but the mass is very less. If I make this wire very thin, so mass will be very less. So we can say that the mass of this wire is negligible, right? Yes, sir. So negligible mass means that we don't want to include the mass in our calculation. Mass of the string does not affect the calculations of the problem, right? That is why we assume the string to be massless. Practically, it is having some mass, but we will assume that the string is massless, right? String is inextensible. Suppose if I pull this wire with my hands, will it be extended or not? No, Yes. sir. It will be. Yes. If I applied very large amount of force, I can even break this wire. But for the practical applications, it will break. But in the calculations, we will assume that no matter kitna bhi force, no matter what high magnitude of force is applied on this wire, the length of this wire will not change. Otherwise, what will happen? It will have some relative motion. है ना? I need to, if I want to transfer the motion from my right hand to my left hand, and I pull this wire with the right hand to move my left hand, है ना? So what will happen? The motion will be transferred exactly. But if the length of the string changes during the motion, suppose I replace this wire with a elastic, है ना? Elastic band, what will happen? The exact motion will not be transferred. That is why we assume that the string is inextensible. String को inextensible assume कर लेते हैं, right? So these are the two assumptions while solving the problems related to string. The first one is mass of the string will not be considered. Second one, changes in the length of the string will also not be considered. That is what there is no change in the length of the string, right? Second thing, now observe my both hands. If I move my right hand in such a way that I compress this string, does the motion is exactly transferred to my left hand or not? No, sir. No. Even I am moving my right hand, but left hand is there, still there. It is still, it is not moving. So the exact motion of the right hand is not transferred to the left hand by the string if it is in the compressive forces. But if I stretch the string, the exact motion can be transferred. That is why a string is only used in case of tensile forces, and that is why we say ki tension in a string, never compression. String cannot withstand compressive stresses. It can only withstand tensile forces, right? Okay. So tension in a string is, it is always pulling in nature, tensile. The second thing is, string is assumed to be massless because we don't want to include mass of the string in our calculations. Third one is changes in the length of the string are also neglected. Okay, beta. So these are the forces we need to study before solving the problems related to Newton laws of motion. Now we will discuss about the three laws of motion. The first one is Newton's first law. It provides us the qualitative aspect of force. Qualitative aspect of force means ki what will be the changes in if a force is present, right? So if a force is applied, then there will be some changes in the state of motion, है ना? So first law says कि for the change in the state of motion, force has to be applied. फर्स्ट लॉ केवल इतनी बात करता है क्या कि टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, वी नीड टू अप्लाई फोर्स. दिस इज फर्स्ट लॉ. सेकंड लॉ क्यों बोलता है? सेकंड लॉ क्वांटिफाइज दैट फोर्स कि व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजेस, है ना? तो कितना चेंजेस लाएगा, कितना क्वांटिटी ऑफ फोर्स. सो सेकंड लॉ क्वांटिफाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. एंड थर्ड लॉ सेज कि सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, है ना? कभी भी अकेला फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. फोर्सेस विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन नेचर इन पेयर्स. एंड व्हाट इज दैट पेयर? इज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, राइट बेटा? तो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर के बारे में कौन सा बात करता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, अब बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की. पहले इसको ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना बच्चे. कि एन ऑब्जेक्ट, अभी ये जो स्टेटमेंट लिखा है फर्स्ट वाला, इसी को मैं पढ़ रहा हूं, जस्ट मेरी बात सुनो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं. एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एंड अनटिल एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, राइट? कोई ऑब्जेक्ट है,
वो रेस्ट पर रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर बाहर से यानी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगा दिया जाए, unless and until an unbalanced external force is applied on it, right? An object in uniform motion, second statement सुनना, an object in uniform motion will continue its uniform motion unless and until an unbalanced external force is applied on the object. ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इज, what is uniform motion means? Lokojit, what is uniform motion when velocity is? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या रहती है? वेलोसिटी इज वेरिएबल, है ना? वेलोसिटी इज वेरिएबल, राइट? सो यूनिफॉर्म मोशन मीन्स बेटा, लोकोजीत, युवराज, व्हाट डज यूनिफॉर्म मोशन मीन्स? वेलोसिटी इज, बताओ वेरिएबल, रोहित रोहित, वेरिएबल सर। ओके, साहिल, सर कांस्टेंट होती है वाला। गुरमन्नत, Constant. ओके, लोहित, लोहित तो अनम्यूट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, माइक का प्रॉब्लम लोकोजीत को था कि लोहित को था? पता नहीं। सर लोकोजीत। Lokojit is able to type but he is not able to unmute himself. ठीक है, चलो बढ़िया। Okay, Newton's first law of motion says कि ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन अगर चेंज करना है, if you want to change the state of motion of an object, then you need to apply अनबैलेंस फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, है ना? अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्या कर रहे हो बच्चे आप? 11th में पढ़ा नहीं, अभी भी नहीं पढ़ रहे, क्या कर रहे हो? ऐसे सिलेक्शन होगा क्या? क्या कर रहे हो बच्चे? अभी डांट लगाई जाए आपको? युवराज, लोकोजीत, लोहित, रोहित, क्या कर रहे हो बच्चे? दिस इज द वे हाउ वी लर्न और नॉट? हाँ, ऐसे थोड़े लर्निंग होगा। यू नीड टू रिवाइज द थिंग्स ना, यू नीड टू रिमेम्बर द थिंग्स। ओके, राइट। तो वी नीड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, है ना? तो स्टेट ऑफ मोशन is of three types, right? So inertia of rest, है ना? If an object is at rest, what change can you bring about? The object is at rest, you apply force, it will start to move, है ना? So rest means Yes. velocity is Zero. जीरो। zero. If you apply force, what will happen? It will move. Velocity will change. becomes non-zero, है ना? Velocity becomes non-zero. Okay. Inertia of motion, if an object is moving and you apply force, what will happen? Velocity will change. Third, if an object is moving in a straight, in a single direction, है ना? Inertia of directions means object is moving along a straight line. If you apply force to change the direction, what will happen? Velocity will change, because magnitude, if the magnitude changes, velocity changes. If the direction changes, velocity changes, right? In all the three cases, what is happening to velocity? Is change. Changing. So velocity is changing. If the velocity is changing, that means acceleration is equal to zero. एक्सेलरेशन। If the velocity is changing, that means acceleration is equal to जीरो, नॉन जीरो। कौन बोला? युवराज बोला जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होगा युवराज? सर वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी चेंज हो रही है कि कांस्टेंट है? चेंज हो रही, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नॉन जीरो। नॉन जीरो। तो एक्सेलरेशन विल बी नॉन जीरो, राइट? Acceleration is non-zero, right? So if the force is applied, velocity changes, and velocity changes means acceleration has to be non-zero, right beta? So this is what we learn from Newton's first law, कि if you change the state of motion, then
acceleration has to be non-zero. But what quantity of acceleration? On what quantity of application of unbalanced force? तो कौन कितना unbalanced force हो और कितना acceleration आएगा? That quantification is done by second law of motion. ठीक है? अब सुनो, unbalanced force क्या होता है? What is unbalanced force? Suppose this is block A. I apply some force of 100 Newton, है ना? ये 100 Newton लगाया मैंने, और वापिस from opposite direction I apply another 100 Newton. So what is net force on this block, bacha? 0. 0. So is there any unbalanced external force or all the forces are balanced? All the forces are balanced. All the forces are balanced. So they are cancelling out each other. So will this condition change the state of motion or it will? No, sir. No, right? No, So sir. there is F net is 0 in this case. So if there is F net is 0, that means acceleration will be 0 and you will not observe any changes in the velocity of the object, right? अब क्या करना है? If I give you the value that this force which is applied from the opposite direction is 80 Newton. Now what is the F net, बच्चे? 20 Newton. 20 Newtons towards right. So F net will be like Yes, sir. 20 Newtons और कहाँ पे? Right direction में ऐसे, right? So this is the F net. अब since there is F net means unbalanced external force. So this unbalanced external force is 20 Newton, and since there is a presence of unbalanced external force, so what will happen? State of inertia will change. That means acceleration will be non-zero. That means velocity will start to change. Okay, velocity will change as long as the external forces are applied, right? Yes, sir. As long as this force is applied, the velocity will continue changing, right? Okay, now the second law says कि on the application of some force there will be some non-zero acceleration, and the force and acceleration are related by this equation. F is equal to mass into acceleration. ठीक है? So this is what? Second law of motion. Second law of motion provides a quantitative validation to the first law of motion, right? There is another statement of second law of motion which says that force is directly proportional to rate of change of Momentum. linear momentum. Rate of change of linear momentum. Force के application से there is an change in rate of change of linear momentum. F is directly proportional to dp by dt. dt. ठीक है? What is linear momentum, बेचा? Mass into Mass velocity. into velocity. Mass into velocity. So linear momentum is mass into velocity. Yuvraj, Yes, sir. mass is a vector quantity. Yes or no? Lokoji, mass is a vector quantity. Yes or no, बच्चे बताओ सब. Mass is a vector quantity and velocity is Vector. वेक्टर. अच्छा, युवराज मास क्या होता है? वेक्टर होगा कि स्केलर, बच्चे? मास इज अ, अच्छा, व्हाट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये बताओ युवराज. व्हाट इज ए वेक्टर क्वांटिटी? सर जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो. तो मास का डायरेक्शन होता है या नहीं होता है? नहीं. बताओ. पता ही नहीं है. सुनो, सेब लेने गए, wanted to purchase 1 kilogram of apple. तो 1 kilogram of apple in the downward direction, 1 kilogram of apple in the upward direction. ऐसे बोलते हो क्या जाके, या ये बोलते हो कि 1 किलो सेब दे दो? डायरेक्शन भी बताते हो क्या? नो सर. तो फिर मास इज वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी? स्केलर. स्केलर ना, you need not specify the direction in case of mass, so it is scalar. When you apply a scalar quantity with a vector quantity, what happens, bacha? It's a vector quantity. The resultant is a vector quantity only, right? So linear momentum is a vector quantity. अभी समझ आ रहा है ना? If you have an arrowhead over a quantity, it's a vector quantity. So P is equal to mv. So
rate of change of linear momentum dp by dt can be written in dt of mv. We replaced p by mv. Since mass is constant for a given object, तो mass हम बाहर ले आए. And dv by dt. What is dv by dt? Acceleration. Acceleration, Acceleration. instantaneous. We learned it m1d, right? So it is instantaneous acceleration. So we replaced m dv by dt by a. So we validated that dp by dt, rate of change of linear momentum, is nothing but mass into acceleration, and that we know it is f net, right? So this is second law of motion. And third law of motion is third law of motion we will discuss Action, for reaction pairs. action and reaction pairs, right? So solve this question, बच्चे. Solve करो इसको. Give me the value of theta. Give me the value of theta. We will answer this question in poll. I have received only 2 votes, बच्चे. बाकी सब लोग करो यार. जिन बच्चों ने आंसर कर दिया हैंड रेज करना बच्चे. साहिल, लोहित. साहिल नहीं आ रहा समझ. No, sir. Confused. क्या बताना है आपको? Body of mass 1 kg is moving with velocity this. What is the angle made by the momentum vector with x-axis? So what is value of momentum vector? P is equal to mv. मास का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 1.
and velocity is given as a vector quantity 10 I cap plus 5 j cap. So what is the value of momentum vector बच्चे? P is equal to 10 I cap plus 5 j cap, right? And if you plot this momentum vector, it will look like this: 10 in I cap direction and 5 in j cap direction. So this red color line, na, I am highlighting it again. So this is momentum vector. So what is the value of theta? What is the angle made by momentum vector with x-axis? X-axis is what, बच्चे? I cap direction. So what is the value of this theta? What is the value of this theta? We can use tan theta in this triangle, na? Tan theta is equal to, One opposite by adjacent. huh? Opposite by adjacent. Perpendicular by, Okay, perpendicular by adjacent. yes. So we can write tangent theta is equal to P by B. What is 5 value of perpendicular? 5. 10 by 5. 5 by 5 by 10, बच्चे. Perpendicular is just angle, the value opposite to theta. And along is its base. 5 by 10. Now what is the value of theta, बच्चे? Theta is equal to 1 by 2. Tan Tan inverse 1 inverse. by 2. tan inverse One. 1 by 2. Which is the right answer? Option number First option. A. Option number A. ठीक है, समझ आया युवराज, लोकोजीत, रोहित? Yes, sir. क्या समझ आया बताओ? How we calculated this theta here? बताओ युवराज, बताओ कैसे किया, एक बार बताओ बच्चे. How we solved this? सर ये हम लोग 10 I के और 5 j कैप को x एक्सिस और y एक्सिस में रख देंगे. उसके बाद हमें x एक्सिस से डायरेक्शन निकालनी है, तो 10 I कैप x एक्सिस से लेंगे, 5 j कैप y एक्सिस से, और उस पॉइंट पे प्लॉट कर देंगे. फिर राइट, उसके बाद tan theta इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू 5/10. यस, फिर तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा. ठीक है, समझ आ गया ना, मतलब राइट. रोहित आपको समझ आया बच्चे? हाँ सर. आ गया. यस सर. लोकोजीत एंड लोहित, कुछ बच्चे ना इतने धूर्त किस्म के होते हैं, उनको 5 बार बोलो तब भी नहीं बोलते हैं, है ना. सो दे आर सो डिसरिस्पेक्टफुल, है ना. हम पागल हैं, आपको बोलते रहते हैं. चलो कोई बात नहीं, सिलेक्शन हमारा तो होना नहीं है, आपका ही होना है. ट्राई करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा. इज इट, दिस इज एज सिंपल एज दैट ना बच्चे ना. अगर नहीं करोगे तो कैसे होगा सिलेक्शन? ठीक है, अब दिस इज द सेकंड क्वेश्चन दैट वी विल बी सॉल्विंग बच्चे. रीड दिस क्वेश्चन ट्वाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू फॉलो व्हाट यू वांट, है ना. पहले एक बार खुद से पढ़ो, then I will explain the question, provide you some hints, and then we can answer that question. It is very easy. हाँ, करो सब लोग try. And no student should drop in between the class, है ना. If somebody drops, disconnects the call in between the class, so पहला disadvantage is कि उनका selection नहीं होगा, है ना, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो selection नहीं होगा. और दूसरा disadvantage है कि उनका नाम मैं highlight कर दूंगा कि these are the student who are not taking their classes seriously, है ना. तो अभी आप पढ़ो ये क्वेश्चन, ट्राई टू, इफ यू हैव a genuine concern, आपको समझ नहीं आ रहा, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, because we are here to learn and to prepare for our NEET exam, so JEE, है ना. So we are preparing for our JEE exam, so you have to learn. Giving you 2 minutes of time, just think it, solve it, give me the answer.
जब आंसर आ जाए तो हैंड रेज करना है बच्चे। देखो आपको प्रोसेस बता रहा हूँ हाउ टू सॉल्व दिस वन। A 2 kilogram object is subjected to 3 forces that give it an acceleration of -8 meter per second square. If 2 of the 3 forces are F1 and F2, find the third force. अच्छा, अभी याद करो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए होता है बच्चे? नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। Force. So F net is equal to mass into acceleration. Right? What is the value of mass given in the question? Bolo. So 2 kilogram. 2 kilograms. And what is the value of acceleration? -8 -8 -8 in x-axis. Meter per direction, second. है ना? I I cap direction. So what is the value of F net बच्चे? -16 -16 I cap direction, right? So this is the F net, and F net is the resultant of all the forces acting on the body, है ना? तो resultant force कैसे निकलता है? When you add all the individual vector forces in the vector form, right? So F net is equal to F1 plus F2 plus F3. In the question, F1 is given, F2 is given, but F3 we need to find out, right? So we will assume that F3 is equal to X I cap plus Y J cap. So the problem is now we have to find out value of X and value of Y. Solve it. साहिल हो गया आपका? सर Yes, sir. -2i -24 जी माइनस 2i -24 जी युवराज ने। साहिल हो गया आपका बच्चे? Yes, sir. Fourth option. 18 I cap और 24 J cap. एक आई कैप गलत आ रहा है आपका भी और युवराज का भी। फिर से ट्राई करो। गुरमन्नत आप क्या बच्चे? सर -34 I cap -24 J cap. राइट। तो आंसर आएगा F3 का -34 I कैप -24 J कैप, है ना? करो सॉल्व। रोहित कर रहे हो? रोहित लोकोजीत, गौरव। यस सर आगे। कुछ बच्चों को ऐसे लगता है कि फ्री कोचिंग है तो क्या है? क्या कोचिंग फ्री है बच्चे? बताओ क्या फ्री है? साहिल, युवराज, गुरमन्नत, फ्री है बच्चे ये कोचिंग? Yes, sir. किसके लिए? आपके लिए, है ना? क्यों? क्योंकि आपको सेलेक्ट किया गया है इस कोचिंग के लिए, अदरवाइज फ्री नहीं है। अदरवाइज दिस इज नॉट अ फ्री कोचिंग, है ना? तो इसको फ्री कोचिंग के जैसे मत लो। You have to study, you have to follow the instructions, you have to do your homework, you have to very actively participating in the class. Otherwise क्या होगा बच्चे? इन द वर्स्ट केसेस पता है क्या क्या हो सकता है ना? दिस अपॉर्चुनिटी कैन बी प्रोवाइडेड टू मोर डिजर्विंग कैंडिडेट, है ना? ऐसा हो सकता है। तो व्हेन यू कम टू द क्लास क्या करना है? सीरियसली पार्टिसिपेट करना है ना? जैसे साहिल कर रहे हैं, जैसे गुरमन्नत कर रहे हैं, युवराज इज ऑल्सो ट्राइंग। बाकी बच्चे जो शांत बैठे हो ना, तो Sir, -34 I cap और -24 J cap. Yeah? सही है। नाउ इज इज राइट। युवराज आया आपका? यस सर। क्या आया? -34 आया? -34 I cap -24 J cap। राइट, है ना? लोकोजीत, रोहित, लोहित, गौरव कर रहे हो कि नहीं कर रहे? अरे ये तो बता दो। कर रहे हैं सर। तो एफ नेट की वैल्यू क्या रखे बच्चे? -16 आई कैप। F1 क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दिया है? 30 in I cap डायरेक्शन और 16 in J cap डायरेक्शन। Then F2 is also given in the question. F2 क्या है बच्चे? F2 is -12 in I cap direction, then +8 in J cap direction, and then F3 is given. F3 क्या है?
x in I cap direction and y in j cap direction. Now we need to find out x and y. How we can find out बच्चे? We can take the terms with I cap individually, है ना? पहले I cap को उठा लेते हैं. क्या रखेंगे? -16 is equal to 30. Another term is -12 with I cap. Another term is x with I cap. So implies x is equal to क्या होगा? -16 -30 plus 12. So it will be -34. So x will become -34. In the same way, we can calculate for y also. So on the left side of equality, is there any term with j cap, beta? No. No, sir. So what we will do? 0. We will take 0. So 0 is equal to, now another term is 16 is equal to 16 plus 8 Y. plus y. Implies y is equal to बच्चे -24. So what is the value of y? -24. And what is the value of x? -34. Can we now write the value for f3? F3 will become, we will replace x with -34 in I cap direction. Then -24 in j cap direction. This is the value of f3. So are we able to find out the third force? Yes. Yes, sir. So this is the third force acting on the object of mass 2 kilograms, whose acceleration is -8 meter per second square in I cap direction. If the two forces provided are F1 and F2, right बच्चे? सर इसको हम मैग्नीट्यूड निकाल के भी सॉल्व कर सकते थे ना? किस कैसे मैग्नीट्यूड निकालते बच्चे? मतलब F1 का अंडर द रूट लेके अच्छा अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ F1 देन मैग्नीट्यूड ऑफ F2 देन यू कर सकते थे, बट दैट बिकम्स लेंथी आई बिलीव. उससे ऐसा एक कंपोनेंट वाइज नहीं आएगा बच्चे, फिर उससे F3 का खाली मैग्नीट्यूड ही आएगा. ओके सर. तो किसने डिस्कनेक्ट किया अभी? उनका नाम लिख लेते हैं. लोहित, लोकोजीत, गौरव. कौन था भाई? एक एक्स्ट्रा बच्चा था ना, कौन था? युवराज इज देयर. अभी डिस्कनेक्ट किसने किया? रोहित, लोकोजीत. बता दो यार कौन था. नहीं बता आपको? देखना पड़ेगा. चलो छोड़ो, देख लेंगे, मैं देख लूंगा, याद आ जाएगा. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है बच्चे? कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. रिएक्शन. ठीक है. तो अब एक्शन एंड रिएक्शन का देखो क्या होगा. These are two objects, object A and object B. Suppose object A is applying some force on B and B is applying some force on A. ठीक है. So force F applied by A on B. So F applied on A by B is FAB. So this is the force. This force is applied by B on A. That is why this force is pulling object A towards right. Right, बच्चे? Now FBA is force applied on B by A. So FBA, force F applied by B on A. So this is applied on B by A. So it is pulling the object B towards object A. So it is pulling the object B towards object A, right? So these are action and reaction pairs. Force FAB is action and FBA is reaction. Or in the other way, we can see that FBA is action and FAB is reaction. So Yes. A is applying force on B and B is applying equal but opposite magnitude का force on A. ठीक है. अब देखो इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस. पहला क्या है? ऑब्जेक्ट अकर साइमल्टेनियसली. ठीक है. इसका एग्जांपल देखो ना. वी विल रिप्लेस ऑब्जेक्ट A and B with me. Suppose I am the object A and you are object B. If I like hold your hand, है ना? If I hold your hand and try to pull you, what will happen? You will also apply a pulling force on me, है ना? I am pulling you and you are pulling on me, है ना? Even if I pull you, so I will feel tensile force and you will also feel tensile force, right? If I push you, I will feel compressive force and you will also feel compressive force, right? So both of the forces occur simultaneously.
they always act in opposite direction to each other, yeah, like 180 degree to each other, acts along the same line of action, are applied on different objects, है ना? I am applying force on you and you are applying force on me, are equal in magnitude and of same nature. Same nature means either both of will be tensile or both of them will be compressive. Right, बच्चे? Yes, sir. Okay, थक गए? No, sir. चलो इसको स्टार्ट करने से पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं ना. आंखें बंद कर लो, क्लोज योर आईज. We will deep breathe for 10 times. Breathe in, breathe out. अच्छा करना है, फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे तो ब्रीदिंग तो आती है ना, we do it all day all night, है ना. Breathe in, breathe out. Again. Again, breathe in, breathe out. Just close your eyes away from your screen, है ना. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. 5 more times. Breathe in, breathe out. Again, breathe in, breathe out. Again, breathe in, breathe out. Again, breathe in, breathe out. Last time. Breathe in, breathe out. Now come back to the screen, बच्चे. Feeling a bit relaxed? Yes, sir. Yes. ठीक है. अब बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की. What is a free body diagram? So it is diagrammatical representation of a body which is isolated from its surroundings, showing all the external forces acting on it. इस पर, इस body पर, the object is separated from its surroundings, isolated from its surroundings, and we are representing or showing all the external forces acting on this separated body. Right, बच्चे? अब समझो एग्जाम्पल से. ग्राउंड दिख रहा है? यस. ग्राउंड के ऊपर क्या रखा है बच्चे? ब्लॉक B. और ब्लॉक बी के ऊपर क्या रखा है? ब्लॉक ए. राइट. नाउ आई वांट टू रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक बी. हाउ कैन आई रिप्रेजेंट? आई कैन टेक दिस ब्लॉक बी आउट ऑफ दिस सराउंडिंग्स. I can take this block B out of its surroundings and represent all the forces acting on this block B. So then that diagram will be the free body diagram of this block. ठीक है बच्चे? I will take out this block B from the surroundings, draw it again, represent all the forces acting on this block B, and that diagram will represent a free body diagram of block B. Yes or no? Yes, sir. Yes. Right. Now what we will do? We will see what all are the forces acting on block B. The first force is gravitational pull, है ना? So it is weight of block B. If I say that let capital M be the mass of block B and small m be the mass of block A, right? So there is capital Mg is the gravitational force acting on this block B, number one. Second force is this external force F, right? Third force is contact force. And what is that contact force, bache? Normal Block A. reaction. Normal reaction applied by ground on block B. So normal reaction applied by ground on block B. This is the third force. Fourth force can be weight of this block A. Weight of block B A is also acting on this thing, na? Small mg. So these are the four forces. The first one is force F. Second one is mg, capital Mg. Third one is normal reaction N. And the fourth force is small mg, which is acting downward. So what I will... हाँ जी बच्चा. Normal reaction of A भी तो है ना? Normal reaction of A कहाँ पे आएगा बताओ? B के ऊपर. B block के contact पे.
बी ब्लॉक के कांटेक्ट में, तो वो आ गया ना mg। बताता हूं सुनो, नॉर्मल रिएक्शन will be there at the contact surface of A and B। ठीक है बच्चे, there will be two normal reaction, not one। the first one will be, let us draw the contact surface first, right? So there are two normal reactions। the first one is normal reaction applied by A on B, है ना? तो this is the normal reaction applied on A by B, right? On A by B। and the second normal reaction will be normal reaction applied on B by A। ठीक है बच्चे, and this normal reaction which is applied by B on A is nothing but small mg। ठीक है, this normal reaction is nothing but small mg, NBA। ठीक है, because small m is the mass of block A। अब देखो इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ, ध्यान से सुनना गुणवत्ता, साहिल एंड अदर स्टूडेंट्स सुनो। if I don't write this NBA, है ना, what I can write, I just omit this and I will simply write कि this is the weight of block A that is acting downward on block B, correct बच्चे? Yes, sir. And in response to this small mg, what happens? There is a normal reaction that is applied on A by B, and this NAB is equal to weight of block A। yes, भाई जितना ब्लॉक ए नीचे वेट एक्सर्ट करेगा उसी के इक्वल तो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई होगा बच्चे। Yes. यस, Yes, अब sir. ये जो आप बोल रहे थे नॉर्मल रिएक्शन जो mg होगा वो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड ऑन व्हाट? ब्लॉक बी बाय ए। ठीक है, Okay, यहाँ sir. पे NBA and NAB are excellent reaction pairs। they are equal in magnitude, they are opposite in direction, they are acting simultaneously। yes बच्चे, Okay, both sir. of them are compressive in nature। और सर ग्रेविटी में ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो हाँ। सर इसके मास से जुड़ गया क्या? कौन से मास से? जो mg है ना, नॉर्मल रिएक्शन बी ऑन ए, हाँ, वो ग्रेविटी फोर्स आएगा या फिर उसमें ही है? उसी में है नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोला मैंने? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन नहीं हो सकता? हो सकता। नॉर्मल रिएक्शन का हमने क्या पढ़ा बच्ची कि कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी फोर्स आएगा उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। सिंस इट इज नॉर्मल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस 90 डिग्री को तो नॉर्मल बोलते हैं ना बच्चे। तो इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस एंड द मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ ब्लॉक ए, राइट? अब वेट ऑफ ब्लॉक ए को ही आप नॉर्मल रिएक्शन लिख दे रहे हो ना, बिकॉज इट इज नॉर्मल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। अभी ऐसा नहीं है, हम लोग कन्वेंशनली क्या सोचते हैं, नॉर्मल रिएक्शन इज समथिंग विच इज वर्टिकली अपवर्ड, है ना हमारा वो कनोशन रहता है, बट दैट इज रॉन्ग ना, डाउनवर्ड भी हो सकता है, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन हैज टू बी नॉर्मल टू द सरफेस। समझो, छोड़ो वो समझ नहीं आ रहा, इतना समझ आ रहा है कि mg will be acting, small mg will be acting downward। yes, and in response to this small mg there is normal reaction NAB vertically upward। yes, yes, बस इतना समझ आए। अब इनमें से मुझे बताओ, सर out of these two forces mg and NAB, which one is acting on block B? MG. mg, right? समझ गए? अब Yes, do we need to draw NAB on free body diagram of block B? No, No. sir. Because NAB is acting on block A. ए। ठीक है, अब बोलो क्या पूछ रहे थे साहिल? सर मेरे को बता दिया तो मतलब ग्रेविटी फोर्स कभी पेयर्स में होता है ना, तो Yes. जब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है तो उसके ऑपोजिट में नॉर्मल फोर्स ऊपर लगता है, ऐसा बताइए। Yes, Vikwan. समझो, नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय ग्राउंड ऑन ब्लॉक ब्लॉक बी, बी। तो क्या होगा वो? किसके इक्वल होगा वो? दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg। देखो ना, हाँ, ग्राउंड के ऊपर कितना वेट है?
कैपिटल mg एंड स्मॉल mg दोनों ऐड होके ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? Yes, sir. यस। अभी जो बच्चे छोड़ के जा रहे हैं ना, बिलीव मी, आई विल नॉट अलाउ देम टू एंटर माय क्लास अगेन, बिलीव मी। So this is mg and this is right. Okay, you know why this is happening, बच्चे? If you are facing particular challenge in the class, you just let me know. There are multiple ways. There is a comment box. There is you can unmute and answer. You can unmute and ask. है ना? Is this the way how we have to learn, बच्चे? बताओ।